welcome. You're watching the Newshour Agenda. I'm Padmaja Joshi. The lady who is behind the documentary on Kali today reacted on the series of cases that have been lodged against her. This is the gist of what she said. Leena Manimegalai said that she feels unsafe in India now because it has turned into a hate machine that wants to censor her. Also putting out a picture of two folk artists dressed as Shiv and Parvati lighting up, she asserted that this is how folk artists chill in our country, and it's this very diversity that the Sangh Parivar wants to destroy with their relentless hate and religious bigotry. In fact, she even went on to call what is happening, with people protesting against her film being pulled out from a film festival in Canada. She said this is, and I quote, a grand-scale mass lynching by fundamentalist elements. And after all of these justifications, the irony just got even more acute. Let's walk you through some of the fears that Ms. Manimegalai harbors and then compare it to what actually is happening. First is that India is turning into a hate machine. What the lady doesn't see is that actual beheading calls, actual calls dripping with hate are being given, not against her, but against Nupur Sharma. Who's a hate machine then? Second, while she thinks that the whole nation wants to censor her, one would do well to remember that there are sizable section of India's population still supporting her, whereas those who are daring to support Nupur Sharma have been beaten, threatened, or worse. Third, she's lamenting that now she just doesn't feel safe anywhere, conveniently forgetting that it is Nupur Sharma who is in hiding even as we speak. And finally, this is perhaps the most stone deaf of all of her complaints about India, that what she's being subjected to is a grand-scale mass lynching. What does one even say about this? Leena Manimegalai is dramatically calling herself a victim of grand-scale mass lynching, forgetting that Kanhaiya Lal and Umesh Kole were actually subjected to a grand-scale mass lynching, which basically makes one ask, are people like Leena Manimegalai completely blind to reality? Or they choose to be blind because it suits them, because they can get away with it? How is it okay to first denigrate a religion or generally make thoughtless, flippant comments about it and then play victim? And if you really care about India not becoming a hate republic, why are you so scared of calling out actual hate that is claiming the lives of your fellow Indians? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. Anirban Banerjee, political analyst, Dr. D.K. Giri, political analyst, Anurag Bhadoria, national spokesperson, Samajwadi Party, Saket Gokhale, national spokesperson, Trinamool Congress, Nigat Abbas, political analyst. My first question is to Khushbu, leader of the BJP. You stay in India, Khushbu. Do you feel that there is a large-scale hate machine that is now existing around you? That's what our country has become, a hate machine? Not at all. I have never felt this safer in my country ever before. We are in times when everything is equal. We are in times where we feel that democracy is celebrated to the max. Whatever people say, let me tell them that I'm a Muslim and I say that without any fear. Here, in today's times, we, right from Kashmir to Kanyakumari, from West Bengal to Gujarat, we live in harmony. When you talk about this hate machine, it is those who have this in the back of their minds to spread hate in the country. I would like to ask the same liberal-minded people, and let me tell you that I am quite liberal myself and I have spoken on many occasions, but let me ask the so-called liberal-minded people, where were they when there was actually hate being spread in this country? They were quiet. They were mute spectators to what happened to Nupur, to what happened to Kanhaiya Lal. I want to ask, they might turn around and ask me that where was I when the lynching happened? I was very much here and I was very much on the same TV channels speaking for that also. If you believe
in democracy, if you believe in equality, if you believe in your nation, then you need to be here and face every truth and not become or put up a picture of being a victim for all your own wrongdoings. Do you think it's become very convenient to blame the country when you are at fault, first basically provoke people and then play victim? And say India is hateful, not me, India is hateful. Absolutely. Saket Gokhale. No, India is not. I agree with you. I think. Just a second. I think you have an audio issue. Yes, there's an echo. Sorry. Go on. You're asking me, right? Yes, okay, yeah. Mr. Gokhale. Yeah. It's pathetic. I mean, these claims about how, this playing the victim card now. Frankly, until 3 days ago, I did not even know that this person existed. And they have now very clearly put out this incredibly derogatory picture, followed it up with a lot of other things. They got what they wanted, which is publicity. This was a cheap publicity stunt. And I would say anybody that refers to individuals like these as liberals, sorry, liberalism does not mean insulting somebody else. Liberalism, what is the meaning of the essence of liberalism? Means that I respect what you hold sacred and you respect what I hold sacred. The idea of coexisting with each other. So now, to put out I also do not believe that this filmmaker, while putting out that poster, was so clueless that she did not know it as derogatory. Come on, to show goddess smoking, it's self-explanatory how derogatory that is. So to put that out, get the publicity that you wanted. There's this whole dictum now that, any publicity is good publicity. And this individual got the publicity that they wanted. And to sit in Canada and cry victim, and what happens at the end of the day? These people provoke communities. People, be it Nupur Sharma or be it this Leena, they provoke communities, and what happens at the end is innocent people lose their lives. It's innocent people on the streets who lose their lives. Nothing happens to these people. They don't go to jail. One is sitting safely in Canada. The other one is conveniently dodging the police of 3 different states. But what is happening? Poor Kanhaiya Lal has gotten murdered. There are other people who have gotten killed because of this. The point is it affects the common people. Nothing. These people can provoke hate and get away. But it's the common people that suffer because of it. Actually, the comparison there, the slight difference that I have with you over there, Mr. Gokhale, is that Nupur is in hiding, whereas Leena Mani Mekalai is still sitting pretty comfortably in Canada saying, I'm being subjected to a mass lynching. She has been subjected to 0 lynching and she should be safe. Leena Mani Mekalai has got absolutely nothing in common with Nupur right now. Nupur has police security from the Delhi police. And if evading the law is hiding and sitting in fear, then Nirav Modi is also hiding and sitting in fear. The Supreme Court said she should be arrested. Sir, she is in hiding because there are literal threats to behead her. As opposed to a Leena Mani Mekalai, who the worst that she has faced is 5 FIRs. Which is what happens to anyone in our country who makes these random thoughtless comments. A jail is the safest place to be. You're under police protection in jail. Okay. Why not turn yourself in? I won't get into that. That's a separate conversation for another day. Anirban Banerjee, to say that, I am being subjected to large-scale lynching when people are dead. Do people like Leena Mani Mekalai make fun of one sentiment because they can? Because they know we'll get away with it. Oh, well, I'm not very sure exactly what sentiment you're referring to here. If I have seen the second picture that she tweeted correctly, she was referring to the folk artist who we know in Bengal as Bohurupis. I think they're also known as Bhairupiyas in other parts of India and maybe some other terms as well, who dress themselves up as various gods or goddesses, whether it is Shiv Thakur or Kali Thakur or other gods, and they roam around in the village or in the neighborhood entertaining people and then maybe collecting some alms or but food Mr. or Banerjee, whatever. you don't get to decide what is hurtful. She has put up, somebody may find it hurtful. A picture of Kali smoking people may find hurtful. That is the point. Nobody gets to decide.
fine. If when people are referring to the way Kali is worshipped in Bengal as derogatory or so just a second, if you're saying nobody gets to decide, why do you decide that Nupur is hurtful to Muslim sentiments? Why did you decide that Nupur is hurtful to Muslim sentiments if you yourself are saying nobody gets to decide? Supreme Court did. I didn't. Supreme Court did. No, Padmaja, I didn't. Supreme Court did, not I. Okay. It was the Delhi police who filed an FIR, other police from the other states who filed an FIR. Her own party called her a fringe element. I didn't do all that. So political parties have taken a stand vis-a-vis Nupur being responsible. That being said, let me actually quote to you, just a second, let me bring in Anurag Bhadoria also, and let me quote to you. What's interesting is that the same lady, Anurag Bhadoria, was specifically asked, Leena Mani Meklai was asked, would you show other gods this way? What is her answer? Specific question. Would you show other gods this way like Kali? She says, one recurring question is that those criticizing filmmaker have posed if she would dare to portray Islamic or Christian figure in a manner. I am an atheist who believes in science. I have a keen interest in faith, folklore and oral traditions. According to Marx, religion is opium of the people. If a God created unequal society and made millions suffer in name of religion and caste, the very purpose of being God is lost. Why is it that the moment a Hindu person files an FIR, Leena Mani Meklai is like, I'm being lynched. The moment she is asked, ma'am, would you show a Muslim figure also in the same way or somebody from Christian faith the same way, she suddenly starts quoting Marx. Why? You are all about creative freedom, right? Why don't you creatively express yourself about the Prophet or about Christ? इस देश के अंदर में अचानक ऐसा क्या हो गया है कि लोग इस तरह की जो बातें करने लगे हैं, जैसे लीना ने किया या उदयपुर की जो घटना हुई, पूरे हिंदुस्तान ने उसकी निंदा की और कहा ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आस्था के ऊपर खिलवाड़ जो शुरू हुआ है, आस्था के ऊपर जिस तरह का जो लोगों ने कहते हैं ना कि उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, आखिर ये हो क्यों रहा है? और जो लोग करते हैं उनके ऊपर में कुछ लोग बचाने को भी होते हैं। मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर में नफरत की राजनीति है ही क्यों? अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करने लगूं तो इनके तो निषाद है। हमारे उत्तर प्रदेश में मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, जिन्होंने कहा था कि राम दशरथ के बेटे ही नहीं है। और किसी एक उनके जो डिप्टी सीएम थे उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि सीता माँ टेस्ट ट्यूब बेबी थी। और एक और है मंत्री जो उन्होंने दोनों हाथों से उनको ले लिया अपनी पार्टी में, उनके बेटे को रम का मंत्री भी बना दिया, जिन्होंने कहा था पार्लियामेंट में खड़े होके कि रम में राम बसते हैं, विस्की में विष्णु है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात राम में रम दिख रहे थे, कोई बात नहीं। नरेश अग्रवाल जी उस वक्त आपके सांसद थे, हमने उनको निकाल के फेंका, आपने निकाला ले लिया, उन्होंने छोड़ दिया। आपने रम के बाद उनको निकाला नहीं था, उन्होंने छोड़ दिया। चलिए मैं मान लिया आपकी बात, आपने कोई एक्शन नहीं लिया था उस वक्त। अभी आपको अभी आप आहत हो रहे हैं राम और रम में, उस वक्त आपने उनके खिलाफ 2 पैसे का एक्शन नहीं लिया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को मंत्री क्यों बनाती है? सवाल है कि सत्ता पाने के लिए आप निषाद पार्टी के उनको अपने साथ मिला लेते हो और वो कुछ भी बोलेंगे भगवान के लिए और आप उनको मंत्री बनाना क्योंकि आपको सत्ता पानी है। हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी अगर आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसको कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर में होनी चाहिए। आपने बात नफरत की और आप फौरन उसको ले गए संजय निषाद के ऊपर। बीच में आपने थोड़ा सा एक पिट स्टॉप नहीं किया गौहर चिश्ती पे, जो गौहर चिश्ती नारे लगा रहे थे गुस्ताखे रसूल की एक सजा सर तन पे जुदा। आपको लगता है कि गौहर चिश्ती नफरत फैला रहे हैं? वो नफरती है, वो क्या वो नफरती है? क्या वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं? कोई जगह नहीं है। क्या वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं? कोई जगह नहीं है। क्या गौहर चिश्ती कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने तो बोला अगर कोई व्यक्ति कोई भी नफरती है। कौन नफरती है? गौहर चिश्ती। अगर इस तरह की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात में कार्रवाई होनी चाहिए, पर वो नफरती है, कार्रवाई कीजिए। क्या वो नफरती हैं? बिल्कुल, उन्होंने अगर इस तरह की बात बोली है धर्म आस्था के विषय अगर खिलाफ कोई बोलेगा, किसी भी धर्म के खिलाफ बोलेगा, चाहे किसी भी जात धर्म का व्यक्ति हो, उसको हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या वो नफरती है कि नहीं? मैं बोला कोई भी व्यक्ति नफरत की बात करेगा। नफरती है कि नहीं? गौहर चिश्ती हो रहा है, अनुराग भदौरिया हो, अगर कोई व्यक्ति हो, नफरती है कि नहीं? नफरत की बात करेंगे तो उनको कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई व्यक्ति हो, आप इधर घुमाइए मत, आपके बीजेपी बचाना चाहती है। मैं तो सीधी बात कर रही हूं, अनुराग भदौरिया अगर नफरत की बात करेंगे तो अनुराग भदौरिया को भी सजा मिलनी चाहिए। अगर कोई दूसरा भी कर रहा है तो उससे भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो संजय निषाद को बोला कि वो नफरती है। नहीं, आप बताइए संजय निषाद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्यों नहीं हुई? गौहर चिश्ती नफरती है कि नहीं? आप सवाल का जवाब दीजिए। फिर क्यों नहीं हुई? क्या नरेश अग्रवाल पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिर क्यों नहीं हुई? नफरती बोलने में आपकी जबान इतनी लड़खड़ाती
कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने कब बोला नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आपके पार्टी के लोग हैं, मेरे पार्टी जो कि उनको सपोर्ट करते हैं। कोई सपोर्ट नहीं करता नफरत को। शफीउर रहमान बर्क ने सपोर्ट किया है, गौहर चिश्ती ने। मैं आपको बताती हूँ, नहीं करते हम लोग, मैं आपको बताती हूँ। मैं कहता हूँ, अरे आप नहीं करते होंगे, आपके सांसद करते हैं। मैं स्पोक्समैन पार्टी का, कि आप, मैं कह रहा हूँ हम ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो नफरत की राजनीति करेंगे। आप स्पोक्समैन है, वो सांसद है। मैं आपको कह रहा हूँ, सांसद उन्होंने सपोर्ट मैं कह रहा हूँ हम ऐसे लोगों का सपोर्ट नहीं करते। मैं आपको बताती हूँ सर। अरे आप रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछा, वो आपने नहीं बताया। सरवर चिश्ती है। अनुराग जी, आप लोगों को सुनने क्यों नहीं दे रहे? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अनुराग जी, आप लोगों को सुनने क्यों नहीं दे रहे? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप क्यों बचाते रहते हैं बीजेपी को? मुझे समझ में नहीं आता। नहीं, सत्ता में ये आपका टूल किट है। जैसे ही आप एक सवाल में फंस जाते हैं, आप बीजेपी को ले आते हैं, और अभी आप स्टूडियो में तो आपको आउटशॉट कर रहे हैं। 10 सेकंड चाहते हैं कि डिबेट के बाद ये हो क्या? पद्मजा जी, आपने क्या डिबेट की है? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचा लेंगे आप? ये वाहवाही लूटने के लिए आप हमें फंसाने जबरदस्ती, ये है वो है। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर में कोई भी नफरत की राजनीति करेगा, चाहे किसी भी दल से हो, चाहे अनुराग भदौरिया हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई पार्टी हो, यहां पे नफरत की राजनीति करने वाले की कोई जगह नहीं है। और मैं तो कहता हूं हेट स्पीच की कानून बनाइए। भारतीय जनता पार्टी क्यों डिबेट में नहीं आई? क्योंकि उसको कानून बनाने से डर लगता है, क्योंकि बीजेपी के लोग ज्यादा 3 मिनट निकाल दिए। कांग्रेचुलेशंस। नाउ लेट मी टेल यू, मैं यहाँ बैठी हूँ, भारतीय जनता पार्टी डिबेट में नहीं, यहाँ बैठी हूँ। Abbas, also just a second. Khushbu, before you quickly retaliate, let me put a few facts in front of people. Just a second, Khushbu. Let me put one fact in front of people. A few months ago, Sarwar Chishti, who's from the Ajmer Dargah, he gave a speech saying कि हम तुम्हारे रूलर्स थे, याद रखो हम तुम्हारे रूलर्स थे, हमें इतना मजबूर मत करो कि हम दोबारा तुम्हें अपना मुलाजिम बना ले। एट दैट टाइम आपके सांसद हैं शफीउर रहमान बर्क, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। अब अगर वो नफरती हैं तो आपके सांसद भी नफरती हैं। चलिए कोई बात नहीं, लेट खुशबू क्विकली रिस्पॉन्ड। लेट खुशबू क्विकली रिस्पॉन्ड। आप गलत कर रहे हैं, नहीं किया सपोर्ट। चलिए, लेट समाजवादी लोग नफरत की राजनीति करने वालों को सपोर्ट नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी को मुबारक। प्रॉब्लम विद दिस पीपल इज द मिनट यू आस्क देम अ क्वेश्चन, हम लोग तो विकास की बात करने भाई साहब थोड़ा आप शांत रहें, आप थोड़ा शांत रहें। आप ही बार-बार नफरत की राजनीति पर बात, आप ही हमसे कहते हो ना कि अनुराग भदौरिया आप आओगे 100 डाल गिराने लोगोगे, एक्सप्रेस गिराने लोगोगे, रिवर फ्रंट आपने बनाया गिराने लोगोगे, आप गिनाने लोगोगे, अरे अनुराग जी आप गिनाने लोगे कि ये मिसयूज है, मिसयूज ऑफ प्रिविलेज है। आप यहाँ बैठे हैं, क्यों बौखलाए हुए हैं? अनुराग जी, हम विकास का काम करते हैं, तो हम लोग विकास की राजनीति करने वाले लोग। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। एक बार मुख्यमंत्री आवास में कुछ टेरर अक्यूज को बुलाया गया था, उनसे विकास की चर्चा की होगी। पर चलिए कोई बात नहीं, अभी बहुत कंधार ले जाया जाता है। अरे आप कंधार छोड़िए, आप कंधार छोड़िए, कालिदास मार्ग की बात कीजिए। ये वो लोग हैं पीडीपी के साथ, आप कालिदास मार्ग से कंधार कहाँ चले गए अनुराग जी? ओके, पीडीपी के साथ, टाइम आउट, पीडीपी के साथ सरकार बनाते हैं। टाइम आउट, तो टाइम अप हो जाएगा। जैसे बीजेपी फंसेगी आप टाइम अप कर देंगे, और जब बीजेपी नहीं फंसेगी टाइम ऑन रहेगा। यही समस्या हिंदुस्तान के अंदर हो गई है। यही समस्या है। बोलिए, जवाब दूं, कंधार से कालिदास मार्ग होते हुए खुशबू पे बोलिए। भाजपा को मैं जवाब देती हूँ ना, 2 मिनट चुप रहे ना आप जी। अनुराग जी, आप इतने बौखलाए हुए हैं, आप इतने बौखलाए हुए कि एक सवाल आपसे पूछा गया था और आप एक ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह रट लगाए जा रहे हैं, रट लगाए जा रहे हैं। भाजपा की प्रवक्ता मैं आपके सामने बैठी हूँ, बीच में ना बोले, चलिए बीच में ना बोले। आपके थ्रू देश को प्रवक्ता मैं यहाँ पर हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग इतने घबरा जाते हैं जब भाजपा से कोई सवाल उठता है। और ये भी जो हेट मॉन्गर्स की आप बात करते हैं, जब भी अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात होती है, आप लोग जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, आप लोग जब कांग्रेस के साथ हाथ जोड़ते हैं, हाथ मिलाते हैं कि एक वक्त उनको गालियां देते हैं, दूसरे वक्त हाथ मिलाते हैं और आप करते हैं, कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स है। खाली इलेक्शन के वक्त आप लोग का अपीजमेंट पॉलिटिक्स करनी है, खाली इलेक्शन के वक्त आपको हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम क्रिएट करना है, बाकी वक्त तो आप लोग आराम से बैठे रहते हैं। आपके तहत जब आप चाहते हैं जो बोलता है उसको सपोर्ट करेंगे, आपके संसद वाले सपोर्ट करेंगे, वरना आप मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, 1 मिनट शांत रहिएगा, 1 मिनट शांत रहिएगा। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि अगर भाजपा इतनी गलत कर रही होती तो आज उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार होती। आपकी सरकार है कहां? वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी नहीं है, वहां पर मुसलमानों ने भाजपा को वोट नहीं दिया, वहां पे हिंदुओं ने भाजपा को वोट नहीं दिया, बाकी कम्युनिटी वालों ने भाजपा को वोट नहीं दिया।
अगर आप इतने सही होते, अगर आप वहां पर नफरत नहीं फैला रहे होते और अगर बीजेपी फैला रही होती तो आज उत्तर प्रदेश में भाजपा नहीं होती, आप होते। सवाल का जवाब आपकी आंखों के सामने है। अगर आप सच्चाई को नहीं अपनाना चाहते हैं तो वो आपकी गलतफहमी है और इसलिए आपकी हार हर बार देखी जाती है। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया। भारतीय जनता पार्टी 46% वोट लाके वहां उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बनाया था। समाजवादी पार्टी 22% पे थी। हम 22 से 38% पे पहुंच गए, 38%। वो 46 से 41 पे आ गए। मात्र 3% से आप इधर उधर करके 60 सीटें ऐसी आई हैं जिसमें 300, 400, 500 की मार्जिन में सरकार बना के आप ये कह रहे हो, वॉश आउट कर दे रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं हो। वैसे सरकार बनाना अलग चीज होती है, लेकिन विकास करना अलग बात होती है। सरकार आएगा ना, किस्मत से बन जाती है, किसी के 200 आ गए, किसी के 150 ज्यादा आ गए, कहीं कुछ हो गया और आप इसलिए वाहवाही मत कीजिए। विकास कर रहे हैं इसलिए वोट दे रहे हैं, आप नफरत फैला रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने आपको नकारा है। इसलिए लोगों ने आपको नकारा है। हम डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास हम करते हैं। आपका आइडिया ऑफ हाउ इलेक्शंस आर फॉट एंड व्हाट इज अ रियल विक्ट्री इज वेरी 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 गुड। आपकी मॉरल विक्ट्री हुई है, आपका वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेचुलेशंस, यू आर द रियल एंड एक्चुअल सरकार आप ही की है क्योंकि आपका वोट शेयर बढ़ा है, दैट इज ग्रेट। बट लेट मी प्लीज bring it back on track and let me bring in Nigat Abbas and Professor Giri as well, because Professor Giri, when you have somebody who is sitting comfortably in Canada saying it feels like this whole nation has deteriorated and that all of India is censoring me, isn't it completely unreal? Because remember, the only people who have actually stopped Leena Mani Meklai is actually the Aga Khan Museum in Canada. They are the ones who pulled off her film. Twitter is the one that removed her tweet. So you are branding India as some great censor, hate machine, bigoted, with no religious freedom, when the reality is quite something else. Yeah, you see, I would not like to personalize her comment. In fact, you are endorsing what she has said, by citing the threats to the life of Nupur Sharma. That is also part of head mongering and vengefulness. So he sees, I will not. What she said, I will not personalize it. See, if she is talking about the atmosphere prevailing in India, she is right. That includes the hate campaign against Nupur as well. So she belongs to this country. No, she never spoke about that. So there is an She's never spoken about that. As a matter of fact, all of her hate, her fears of hate is about the supposed victimization that she is facing. The beauty is that there is an actual woman who is being hounded, and then there is Leena Mani Meklai who is painting herself a victim when all that has really happened to her is that her film has been taken off by the Aga Khan Museum in Canada. Her tweet has been removed by Twitter, and she has 4 FIRs filed against her by peace-loving, law-abiding citizens who are saying, excuse me, you cannot keep going on with this. That is it. That's it. But supposedly she is the victim being subjected to large-scale mass lynching. Professor Giri. Can I answer it now? Yes. See, yes, you are a journalist, I am a professor. I look at the facts, I look at the objective situation. You look at the person, you personalize things. You are comparing Nupur and her. I will refuse to do that. I am looking at the atmosphere that prevails in the country today. What is the atmosphere? Which includes Nupur as well. What is the atmosphere? That is my comment. Yes, it is, the atmosphere is, it is a, yes, let me answer. I mean, if you interrupt me so many times, I cannot. The atmosphere is, this atmosphere is full of hate, vindictiveness, and full of people going after each other. There is no understanding, there is no harmony, there is no tolerance, there is no accommodation of difference of opinion. People are going after each other like enemies. That is the atmosphere that So you're saying this is mutual? So I am not worried Both about people are going after each other. I am looking at the whole atmosphere. Okay. 2 people have lost their lives. Padmaja, you said 2 people lost their lives. At whose hands? I am worried about them. What did it happen in this country? At whose hands? Because whoever hand. Everybody whoever in this country. Whose hands? You are differentiating people, Padmaja. Of course, you are there polarizing is a difference. people. There you is are a polarizing difference. people. You are not doing the right thing. Padmaja, you are not. But it is a fact. No, but are they not Indians?
Are there no Indians? Okay. Yes, I'm telling you. Nigat So that's what I'm Abbas, talking about my Nigat country. Abbas, That Indians frustrates are me. going You talk about after who each will other, do. Who and told apparently about that? Leena I'm talking Mani about that. Meglai was also speaking about the Stop threats faced by polarizing people. Nupur. Stop differentiating people. That journalists should be more careful. Right. Thank you, sir. Go on. Nigat Abbas. Padmaja, right now what's happening is that pseudo-seculars in our country are apparently and very prominently trying to create an agenda, and that agenda is to establish this thing worldwide that the Hindus in our country can be targeted, can be murdered, and can be humiliated. Their sentiments have no value, and that is exactly what Leena right now is doing, sitting in Canada back there. Now, my friend, Mr. Professor just said that there's no place and no space for opinion in our country. Now, when you talk about opinion, my friend, let me say and let me alarm you with this opinion that Sar Tan Se Juda is not an opinion. It's a warning. It's a sign of hate. It's a sign of murder. It's a sign of bloodshed. Now, there is no comparison between Leena and Nupur because she's sitting in Canada trying to exploit the sentiments of Hindus of India and trying to compare herself with Nupur, wherein Nupur is actually under life threat, and we've seen that. Just because this whole drama happened, just because all of this happened, a lot of people have lost their lives, and one of them is Kanhaiya Lal. And the Ajmer Hadin, he clearly said कि हम लोग तुम्हें यहाँ पर अपने गुलाम बना लेंगे, तुम्हारे साथ न जाने क्या क्या कर लेंगे. Now I want to ask, यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी बहुत चिल्ला रहे थे. My friend, आप मुझे बताइए ना कि आप कहाँ थे? Where were you when these people were making a video and publicly sharing that with the head uptight that yes, हम ये करने वाले हैं और हम ये करेंगे? At that time, again, you try to mince your eyes and say कि हम तो इस community को जानते ही नहीं है. Actually, that's exactly what's happening, Padmaja, right here. And there's a proper agenda, there's a team, there's a cadre with the entire planning. They're trying to do that. They are actually hurting the sentiment of a community and bringing up a community, and that's my community. I have no shame in saying that. They're trying to exploit my community. They're trying to, create that hate atmosphere in my community and trying to push them, the illiterate people, that go and kill people, go and kill kafirs, go and do what not you want. Now, TMC spokesperson Padmaja. Okay, let Anurag Bhadoria answer because you've asked a specific question to him, and then you can ask your question to the TMC because this will go on for too long otherwise. Just a second, let Anurag Bhadoria please respond to you one by one. हाँ, अनुराग जी आप जवाब दीजिए. देश के अंदर आप कहाँ थे? वही तो उनको शायद मालूम नहीं है. इस देश के अंदर में ऐसा कोई नहीं है जिसने ना कहा हो कि जो उदयपुर की घटना हुई है इसकी सभी निंदा करते हैं और आतंकी घटना है. ये हमने भी कही आतंकी घटना है और ऐसी घटना हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं होगी क्योंकि ये अहिंसावादी देश है, गांधी का देश है. यहाँ हिंसा की कोई जगह नहीं है. ये हम कहने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी कहने की हिम्मत रखनी चाहिए कि देश के अंदर में नफरत की राजनीति बंद करें, देश के अंदर में विकास की राजनीति हो, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा हो. इस पे बात क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी करती? क्यों नफरत की राजनीति को बढ़ावा देती? ये भी तो सवाल है. हम तो निंदा करते हैं, हम तो कहते हैं लोगों की कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए देश के अंदर में. हम तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बोले कि देश के अंदर में हेट स्पीच के कानून बने. अगर कोई हेट स्पीच देता है और धर्म के नाम पे राजनीति करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी जात धर्म का हो, किसी पार्टी का हो. ये मैं तो चिल्ला के बोल रहा हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं नहीं कह सकता. एक सेकंड, जब ये वायलेंस शुरू हुआ क्या आपने बोला कि जो लोग राइट कर रहे हैं? जस्ट अ सेकंड अनुराग भदौरिया, जब ये वायलेंस शुरू हुआ तब आपने ये नहीं कहा कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि नुपुर शर्मा ने माहौल खराब किया? हिंदुस्तान के अंदर में हर व्यक्ति कहता है कि हिंसा की कोई जगह नहीं है. ना पर आपने हिंसा की वजह नुपुर शर्मा को बताया. हिंसा की कोई जगह नहीं है. आपने हिंसा की वजह किसको बताया? जो वजह जो भी है नहीं आपने हिंसा की. लेट मी कोट टू यू व्हाट अखिलेश यादव सेड कि अखिलेश यादव जी ने नुपुर शर्मा का माहौल खराब करना वजह नहीं बताई कि ये हिंसा हो रही है, या उन्होंने कहा जस्ट अ सेकंड कनाडा में बैठा कोई नहीं जस्ट अ सेकंड क्यों खराब करते हैं हिंदुस्तान के अंदर में? तो यही तो आप बात गलत कर रहे हैं. जो हिंसा हुई है वो नुपुर शर्मा की वजह से हुई है या इस्लामिक रेडिकलिज्म की वजह से हुई है? ये भारत में मेरी बात सुन लीजिए.
देश के अंदर में बार बार चिल्ला चिल्ला के हम लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन पद्मजा जी पता नहीं आपको भी क्या हो गया है, आप भारतीय जनता पार्टी से इन्फ्लुएंस क्यों रहते हैं? मैं कह रहा हूं कि सभी को मिलकर, आज पैनल में बैठे सभी लोग, मैं तो कहता हूं कि पार्लियामेंट के अंदर में जो हेट स्पीच है, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हेट स्पीच है, जो नफरत की राजनीति है, इसको करने वाले पे बिल बनाया जाए और कानून बनाया जाए। अगर कोई ऐसी काम करेगा तो उसमें कार्रवाई तुरंत हो, कि जो लेकिन देश जब में तक हिंसा कार्रवाई नहीं होगी, हुई, ये लोग इस तरह की हेट स्पीच देते रहते हैं, कार्रवाई होना जरूरी है। सर, यहाँ पर हजार कानून आ जाएंगे जिनको हिंसा करनी है, वो इसलिए हिंसा करेंगे बिकॉज दे आर को ठेस नहीं पहुंचा सकते आप। अनुराग भदौरिया, लेकिन इसमें क्यों नहीं अनुराग भदौरिया, द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड ऑफ यू इज कि आप जिसको, ये बहुत पुरानी टूल किट हो गई, बहुत पुरानी टूल किट हो गई अनुराग भदौरिया, अरे कितना आप उसको करेंगे? बीजेपी की है, उससे आप नहीं पूछ रहे हो कि सरकार आपकी है, सिस्टम आपके पास है, आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? 2014 के बाद से ज्यादा क्यों बढ़ा है? भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आने के बाद से ये हेट स्पीचेस क्यों हुई है? आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी पूछे आप, दिस कैन नॉट गो। आपसे सिंपल सवाल मैं पूछ रही हूँ, जो सिंपल तो आप पूछते ही नहीं, हिंसा हुई हमारे देश में, उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है या इस्लामिक रेडिकलिज्म जिम्मेदार है? इस देश, चूज। हाँ, मैं बोल रहा हूं, इस देश के अंदर में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नफरत की राजनीति को बढ़ावा आपके पास दो चॉइसेस हैं। मेरे पास चॉइस पूरा इंडिया है, दो नहीं है मेरे पास। ऑप्शन ए नुपुर शर्मा और मैं पूरे ऑप्शन बी इस्लामिक रेडिकलिज्म। व्हाट इज रिस्पांसिबल? हिंदुस्तान है और मैं हिंदुस्तान की जनता की बात करता हूं कि हिंदुस्तान की जनता के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे किसी धर्म का हो। आपसे बेहद धर्म की बात क्यों करें? मैं कहूं किसी धर्म का। Does Islamic radicalism exist in our country? Does Islamic radicalism exist in our country? क्या बोला कि देश के अंदर में किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर यहाँ पे किसी तरह की नफरत की बात करेगा और नफरत की राजनीति करेगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बताइए आप। Okay, are you satisfied with that answer? निगत अब्बास करने से होगा कि वो मुझे सेटिस्फाई करेंगे सरकार में, वो यही तो आप गलती कर रहे हो। अरे आप कमाल की बात कर रहे हो कि आप सेटिस्फाई है तो बताओ। अरे बाप रे बाप, वो क्या सेटिस्फाई होंगे? सरकार अनुराग जी, आप कितना बोलेंगे? उनको जवाब तो देने दीजिए। जवाब देने लायक नहीं है। बोलिए निगत अब्बास, आप पूछिए, आप बताइए निसाद जी को कब आप उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? निगत अब्बास, No, Padmaja, we aren't eligible. Anurag Bhadoria, Nigat Abbas is mine. Padmaja, we aren't eligible to ask this question to Anurag Bhadoria or any one of the oppositions कि ये radicalization था या नहीं। अनुराग भदौरिया सत्ता में नहीं है। अरे अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहकर कोई वीडियो शुरू करता है, वो radical थोड़ी और कहता है requesting you। मुझसे पूछ रही सत्ता पर से सवाल। अनुराग भदौरिया, एक मिनट, अनुराग भदौरिया, निगत अब्बास मेरा नाम। This is क्यों पूछ रहे भाई? समझ में नहीं आ रहा मुझे। This is not encouraged on this show. This non-stop talking. 8 seconds, sir. 30 seconds की शांति रखिए। 30 seconds. Go on, please, Nigat Abbas. Ask your question to Mr. Gokhale now. Yes, go on. बीजेपी से पूछिए। Thank you, Padmaja. I am saying that we aren't eligible to ask this question to Anurag Bhadoria or any of the spokespersons from Samajwadi Party. Now, what I need to ask from him is when somebody starts a video saying Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, shows off the sword, kills a person and then gives a warning to a lady, abusing her and the PM of our country. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू से शुरू करते हैं और नाम मोहम्मद अंसारी और मोहम्मद रियाज हैं। क्या वो कट्टरपंथ है? नहीं है ना। अरे वो कहाँ है कट्टरपंथ? वो तो मजेदार वीडियो बनाई अनुराग भदौरिया, और अनुराग भदौरिया कभी इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं कि वो आतंकवादी हैं। वो कहेंगे ही नहीं इस चीज को, वो मानेंगे ही नहीं कि एक कम्युनिटी से आते। लेट्स जस्ट बी रियल ना, लेट्स पुट द फैक्ट्स अप कि क्यों आईसिस से संबंध आए उनके चक्कर में। क्यों ऐसा होता है कि हमेशा जिन लोगों के नाम खान होते हैं या अंसारी होते हैं या रियाज होते हैं, उनके नाम के आगे आईसिस जुड़ जाता है। कभी बत्रा महाजन के नाम के आगे तो हमने नहीं सुना। That is where your lie is exposed, that you do not want to call it radicalization, wherein I, as a Muslim leader, as Nigat Abbas, would accept this fact that yes, it is terrorism, it is Islamic radicalization, but you will not, because you have a handful of vote bank with you, because you have voters in your pocket saying that hum minority hai. I am assuming that's the same charge you have against the TMC as well. So let Saket Gokhale come in. Just a second, please. Let Saket Gokhale also come in. Why is there, if you're willing to call out one side, why wouldn't you call out the other?
of radicalism that is the basis. If today there is any hate in the country, it is because of radicals. Saket Gokhale. That's the charge against him. Radicalism for any liberal, radicalism of any kind, be it extreme right or extreme left, is dangerous. We've seen the extreme right indulge in violence. We've seen the extreme left indulge in violence. Now, I just have to ask one question. First of all, I don't know why the BJP Delhi spokesperson is being shown as political analyst on your channel. That's a little misleading. Let's at least be clear that Ms. Abbas is the BJP spokesperson. Number two, in Udaipur, the man who did the beheading, part of the BJP. Lashkar-e-Toiba terrorist in Jammu, head of the BJP's IT cell. Now today, Irfan Khan, no, let me finish. Irfan Khan, Mr. Kole in Amravati, was campaigning for Navneet Hanuman Chalisa Rana, who's with the BJP. Now the problem is, are these radicals or are people from the minority community being taken in the Muslim Rashtra Manch and turned into radicals by the BJP? Okay, Khushbu, answer. What kind of a question is that? You mean to say that these kind of radical incidents have happened in India for the first time since BJP came to power in the last 8 years? Have we not seen any kind of terrorism in India before? For the first time in 30 years, we have an Indian flag flying high in a Muslim community like Kashmir. And I take pride being a born Muslim myself, a practicing Muslim myself. I take pride in saying that. We have seen radicalization since the time of independence. For the last 8 years, we have seen the minimum number of any kind of radicalization disturbances in a country. We have seen the worst kind of terrorism in a country. And that was because of the Muslim radicals we have had. You cannot blame the BJP. Let me finish. I haven't finished. I heard you very clearly. I have heard you loud and clear. Let me finish. Let me finish, I said. If you have the guts to ask a question, have the guts to listen to the answer. Okay, just a second. Let her finish. 10 seconds. And then Saket Gokhale, you come back. BJP's last for the 8 years, we have seen the minimum number of terrorism in this country. We have seen the worst terrorist attacks in a country since the time of independence, and BJP wasn't in power then. No, but what do you have to say to the specific charges now? Just a second. It's easy because this is increasingly becoming a charge that is being leveled against you, Khushbu, that in Udaipur and then subsequently, as Mr. Gokhale claims, in the case of Amravati as well, the linkages of people who are involved in these murders is to the BJP. So the charge is that you are using Muslims, radical Muslims, to perpetuate these kind of incidents to spoil the atmosphere. Khushbu. Exactly, that is what I'm asking, Padmaja. There are stray incidents. Muslims are part of BJP. It's like what Zinat Abbas is speaking now. She is not part of BJP. She is there as a person. I'm here speaking as a Muslim. I belong to a particular party which is known for Hindutva, they say. The blame game continues. What happens in the country, it's very easy for the opposition to sit and blame the ruling party for everything. I am asking them, have we not seen the worst terrorist attack by these radical groups in a country before BJP came to power? Saket Gokhale. Have we not seen at best a fig leaf? 1 minute. It is BJP who has been working for this is the same term they use, fringe element. These are stray incidents. How did stray incidents happen back to back? You did not mention Jammu as well. In Jammu, the Lashkar-e-Toiba terrorist was the BJP IT cell head. How in a span of 3 weeks have 3 BJP people been associated with 3 terrorist attacks in India? Deviating from the topic. Okay, again, to try and link, and let me say this purely based on facts, if you're saying that that person, by virtue of having been a member of the BJP and also being involved in the beheading of Kanhaiya Lal, is at the door of the BJP, then Saket Gokhale, you have got leaders of your party who are actually arrested. One, for the burning alive of 9 people, and also in cattle smuggling. You've got leaders of your party who have been booked and summoned by the CBI. So would you say that the TMC is getting cattle smuggling done? Or that the TMC was responsible for the murder of 9 people? No, by that logic, have they been declared guilty? Mr. Amit Shah was also arrested by CBI. No, but you are using your own logic.
You are saying that the beheading is being done by BJP because the accused was seen with Gulab Chand Kataria. Then you've got actual members of the TMC who are responsible, who've been arrested for the murders by your own police, by the way, by the West Bengal police. Not by anyone else. 3 weeks. 3 weeks, 3 terror attacks. Okay. BJP people, look at the time span. All right, I'm just going to have to end it here because we are going to go into an endless circle of whataboutery. The point is that if somebody thinks that today they can try and use the sentiments of one community facetiously because they know that they can, and then try and get additional publicity on top of that by pretending to play victim, that is not going to happen. Because at some point, people are going to get their backs up and say, enough is enough. Please do not play fast and loose with the sentiments of only one community. I'll leave it at that. Thank you very much, all gentlemen. Negat Abbas, Khushbu for having joined us.